like this Google Meet itself, if you see, I'll just give you an example. Like just a year back, in a meeting may were not able to join from Google, like because this Google Meet was like there for some time, but it was not up to that scale. In a year, they scaled now they're like 500 participants, 200 participants, depending upon the size they can join. So usually what happens is कि आप जिस भी एरिया को फॉलो करना चाहते हैं, even if there is some innovation already happening, you can see like कि क्या differentiator है that you can add, especially, and you're focusing on that particular part. Like you should not think your this idea is already taken, so there is nothing additional can be done. So differentiator is what you should focus on, like what is currently out there and what additional value you can add. और second thing जो कि मुझे लगता है कि काफी मैटर करती है, even though Google tried a lot of things in like say messaging areas, like and Google is not as successful as let's say Facebook, like this social networking and so on. I think user friendliness is another important thing, like thinking about the users कि वो क्या चाहते हैं, and adding things around that would be definitely something that will, even though कुछ उसमें exist करता है. For example, search में Yahoo search काफी पहले आया था, Alta Vista search. I don't know many people are familiar here from the student side about that or not. वो पहले आया था. But what you can add and how easy you can make it, that is going to be actually something that you should focus on. और वो differentiation create कर सकते हैं. Great. Rahul, आप हैं अभी? I can't see you, but Rahul, you are there? Look, and you can add a lot to it. Yeah. Can I add? Yeah. Yeah, please. So I think the most important thing is like, don't your ideas, because it's not only idea which makes difference, it's the execution piece which makes all the difference, right? When Google started, Yahoo was at its peak, right, in 2000, and so it was not that something is there you can't win. It has to be how you can be different. That's what Amit Rajat said, right? And most important is execution. Like Flipkart is not a great idea, right? You can also start a store, but how well you can execute and what is the customer experience you can give. So these two things would definitely make a huge difference. So, and always remember that all ideas have been generated. Everybody has generated all those ideas. So don't fall in love with your only ideas. Just focus on execution, whether you can differentiate, whether you can create better user experience, and give your shot. Rahul, I can't see, so I would like to add to it. I do a lot of innovation training and idea generation training, and one thing I want to tell you is, अगर आपके पास जो भी सोचते हो वो आइडिया ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग अभी बहुत कंडीशनड है, आप अभी बॉक्स के बाहर सोच ही नहीं रहे. Because when I do these training programs, we generate hundreds of new ideas. Actually में जैसे लोकेंद्र ने कहा, होता यह है कि वो उन आइडियाज पर फिर आगे काम नहीं करते और 5 साल बाद पता चलता है किसी और स्टार्टअप ने उसी आइडिया के ऊपर काम किया और उनको बहुत बड़ी रकम मिल गई. तो मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा हम ज्यादा पुश करेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो हमको बहुत सारे नए आइडियाज मिलेंगे. और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में इतने प्रॉब्लम्स, हम जिस कंट्री में बैठे हैं इतने प्रॉब्लम्स है, which are actually opportunities for us. क्योंकि अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तो उनको शायद अमेरिका में बैठे किसी आदमी ने उसके बारे में नहीं सोचा है, शायद यूरोप में उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनके सामने कभी आया ही नहीं. इसलिए मैं कहता हूँ कि लेट अस बिलीव दैट वी कैन क्रिएट न्यू आइडियाज. और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से अगले कुछ सालों में हम पेटेंट्स निकालेंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ. और आप सब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ, और हम एलुमनाई भी आपके साथ जुड़ेंगे और इसको we will make it happen. I would suggest students, you can unmute yourself and you can ask directly. Students, जिनका भी क्वेश्चन है आप unmute करके आप quickly question पूछ सकते हैं. Sir, my question is from Puneet. Sir, how you entered in advertising industry? How I entered in advertising industry? Okay. इसका तो सवाल का जवाब मैंने सबसे शुरू में दिया कि जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाना.
तो मैं जब 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब मैं भी पढ़ता था, मैं भी पास होता था, लेकिन मेरा दिल जो था वो कहीं ना कहीं कविता में था, मेरा दिल राइटिंग में था। मेरे देख नई दुनिया और भास्कर में छपते थे। मुझे सबसे ज्यादा लोग उस जमाने में जानते हैं क्योंकि मैं भाषण अच्छा देता था, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता था। कहने का मतलब ये है कि मेरा दिल जो था वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में था। और मुझे जब ये बात समझ में आई तब मैंने उसके बाद एमबीए किया मार्केटिंग में, और मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद मैं एडवर्टाइजिंग में गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग में भी 2 साइड होती है। आप मार्केटिंग साइड में जा सकते हैं क्लाइंट सर्विसिंग में, या आप राइटर बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। मुझे जॉब जितने भी मिल रहे थे वो कह रहे थे आपका बायोडाटा बहुत अच्छा है, तो आपको हम क्लाइंट सर्विसिंग में मार्केटिंग साइड में लेना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे राइटर बनना है और मैं 0 से शुरू करूंगा लेकिन राइटर बनूंगा। तो आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है। और मेरे केस में ये हुआ कि मैंने कहीं ना कहीं ठान रखा था कि मुझे वही करना है जो मेरा दिल चाहता है। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज या गेसू का बहुत बड़ा योगदान रहा। गेसू में इतना क्रिएटिव माहौल था। गेसू में हम लोग जिस तरह से एक वर्ड यूज किया गया है झाम, गेसू में जब झाम होते थे मतलब ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, फेकम फाक होती थी, जोक्स होते थे, एक दूसरे की लेग पुलिंग होती थी, वो सब बहुत क्रिएटिव होती थी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ उज्जैन को भी जोड़ना। उज्जैन एक बहुत फर्टाइल जगह है ये सब सीखने के लिए। और तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है अगर आज मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने वो सब सीखा जिसके कारण एडवर्टाइजिंग की दुनिया में गया तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो एक नया तरह का आदमी मिला हमको, ये आदमी तो कुछ अलग तरह का है, इस आदमी के ये जो लिखता है वो अलग तरह से लिखता है। वो सब हुआ क्योंकि मैं केसू में था और मैं उज्जैन में था। मैं दोनों बातों को यहाँ पर अंडरलाइन। Next question quickly. Sir, is there a way to create multi-vendor website for free? ये जवाब आपको सवाल देंगे। हाँ जी मिश्रा जी आप जाइए, आप रोज वेबसाइट बनाते ही हैं। आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? Is there a way to create a multi-vendor website for free and a first vendor website for selling? Why not? आपको वेबसाइट डिजाइनिंग यदि आप सीख लें और वेब कंटेंट डेवलप करना सीख लें तो आप डेफिनेटली बहुत इजीली बना सकते हैं। उसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा भाई यू नीड टू हैव प्रोडक्ट। यदि किसी भी आप चीज को सेल कर रहे हैं, जैसे लोग इज ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, so I think it is not a difficult thing provided you have the desired skills. Only question is you need to skill yourself to the relevant area. उनका सवाल ये है कि क्या फ्री में बच सकती है क्या? फ्री में सर there are thousands of platforms which allow you to post it free, but यदि जितनी आपकी उसमें limitations होंगी, यदि if you can like allow advertisements will come because there is no free lunch in the world. आपको हर चीज का कुछ न कुछ दूसरे issues आएंगे because they like your data will not be safe. Your like advertisements will come from different sources, but there are n number of free resources available. There is a question from a student from Amrit Raj sir. They want to know his journey to get into the Google. So the students are very keen to know that. Sure. So I can talk about my journey, but there is not like a fixed path, I would say, like before that. Like if you want to get there, I think what you should focus mainly on like the basic concepts of computer science and engineering, like mainly like this
you'll hear these terms as you go through your studies, but data structure, algorithm, operating system, database systems, and so on. But specifically, if you want to know about my journey, so I did my engineering from UECU, 2007 pass out. Then so last year I tried for GATE in computer science and engineering. I got decent ranking, so I was able to get admission to IIT Bombay for MTech. And then I did my MTech from there. And then even after MTech, I think 2008-9 is the time when this recession happened. So the job market was not that good. But yeah, the placement was there from IT. So I joined a company Citrix. I worked there for like a couple of years. The market got better. Then I moved to Microsoft. I worked there for like almost 4.5 years. And the last close to 5 years, I'm in Google. So I think the thing I would say is like, mainly you should focus on first thing is basic concept. Now with the internet, there are many resources which can tell you like how to prepare for these interviews, what skills are required, and so on. And now companies also have a lot of like internships and so on for fresh students. Like if you're good, you can directly apply for those internships. They will do some tests, online tests, and then some interviews and so on. And then actually you can get in there. So in summary, like this is the path I followed, but there are many other paths available today. I would like to add something, and that is what Amit said. I think internship is one very good thing, good way to go forward if you really want to join this kind of big companies, because they you can hear me now? Yes, sir. Yeah. I think they value your practical knowledge a lot, and a lot of internships are available. हमारे बहुत सारे alumni भी अपनी कंपनियों के लिए इंटर्नशिप हमारे साथ शेयर करते हैं। लोगों खुद अपने स्टार्टअप में कुछ लोगों को हम इंटर्न करा रहे हैं। So I think internship is one way to get into all these companies, because I think working on the practical aspects, working on the latest softwares which are coming right now. तो अगर आप इन कंपनियों के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अंदर जाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि you already know what is the latest they are working on. And बातें बहुत लंबी और हमारे साथ बहुत सारे एलुमनाई हैं जो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। और हम विवेक सर, मैं चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे आप चाहें तो हम ऐसे सेशन कर सकते हैं, और ये 1 घंटे का उसके अंदर आप जो वो लगा के मत रखना। यस, लोगों, यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? No, I think you covered pretty well, and I think Amit has also covered the main points here. तो और सवाल आने दो। Students, I would suggest आप unmute करके it would be better कि आप directly question करें panelists से। Come on, students. Good morning, sir. Sir, I would like to request Rahul Jaiswal sir and Amitra Chauhan sir to please advise the students who are not from CSIT branch, so that they can get a job in the top companies like Tesla and Microsoft. So Rahul is not from CS, just sorry, he's from mechanical, I guess. Oh, sorry, I didn't notice. मैं आपको हाँ, And the person who is in Facebook is from electronics. Rajesh Ahuja sir, who is from mechanical. So I mean, branch doesn't matter too much if you are. I mean, I would leave Rahul to answer more if you know like. Rahul is not there, I think, right now. I would just quickly. Yeah. Yeah. So first of all, as Lokendra sir said, yeah, there is no branch requirement. Every company has now requirement for everybody, and in my small observation, this is never was the best time as of today when there is so much overlap. For example, Tesla is using the artificial intelligence and also the high-end manufacturing to use the software part, but also the hardware part, right, to make the car. So I think this batch
First of all, welcome to GESU, or in today's term, Ujjain Engineering College. And I think so. There is no branch, is any constraint. Anybody can join any company. And second, I saw in the chat box somebody said how to join the Tesla, right? So just real quick is so Tesla, I look for some of the things like hands-on experience. How did you solve some problems you encounter? And yeah, so today is also interesting times for engineers. If you say 10 years ago, people used to say, I want to join Goldman Sachs, financial companies. I want to do engineering and MBA. But today, if you see the top 100 companies to work for, and very proud to say that Tesla is number one. Sorry, Google, this year we are number one. So it's a joke. So yeah, so engineering companies are coming back like anything, because you have so many innovations going on everywhere, whether it's a materials or batteries or manufacturing. I mean, look at the Apple also, right? I mean, manufacturing. I mean, all the companies are spending billions of dollars in manufacturing. So from my small experience at Ujjain Engineering College, and I agree with Puneet sir that it's a learning ground. So I would highly recommend, make sure when you do workshop, go to the workshop and do your job, do it honestly. I still remember when I talked to my supplier, I go back to, in my brain, my GESU fundamentals of the workshop. Hello? Can you hear me? So yeah, first is learn all the fundamentals from Ujjain, and yeah, as Puneet sir said, make sure your heart is there, because when I was there, so my first year, उस जमाने में रैगिंग वगैरह भी काफ़ी होती थी, तो अब तो चलो नहीं है. तो फर्स्ट ईयर मुझे टाइम लगा था, लेकिन बट गेसू वाज द बिल्डिंग ग्राउंड. तो अपने जो कोर्सेज हैं उनको सीरियसली लो. बाद में भले MBA या कुछ भी करना हो, लेकिन जो फंडामेंटल जो कोर्सेज हैं उनको बड़ा ध्यान से समझो, नॉट जस्ट फॉर द मार्क्स बट विद द इंटेंट ऑफ लर्निंग, और लर्निंग हमेशा काम आती है. आप आज या आप 10 साल या 20 साल कभी भी जो फंडामेंटल्स हमेशा काम आते हैं. तो आंसरिंग द टेस्ला क्वेश्चन इज दे लुक फॉर हाउ डिड यू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो हमेशा वो इंटरव्यू में पूछते हैं ये. तो yeah, make sure you try to take a project which is very lively during your 4 years. And also, as I think Puneet sir said, internship is very good thing. Like join some companies in your summer break, 1 या 2 महीना, and then try to solve small problem. तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी काम आता है किसी भी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए. So that's from my experience. Thank you, sir. Is there any other question from the student? You can ask directly. किसी प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम क्रिएटिविटी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी इंडिविजुअल की? हाँ जी. हाँ. इसका आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ जी, ये सवाल जिसने पूछा मुझसे दोस्त, आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए? सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ओके, बिल्कुल सही बोला. अगर ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा. अगर वो प्रॉब्लम बहुत अर्जेंट है, बहुत इमीडिएट है, तो सबसे पहले अगर आग लगी तो सबसे पहले तो आग बुझानी है. तब आप ये नहीं कहोगे कि अरे यार इस आग के कारण मेरा कमरा कितना खूबसूरत दिख रहा है और इस आग को कभी यूज करूंगा, खूबसूरत दिखाना है कमरा, तो इस आग को हम यूज कर सकते हैं. उस वक्त आग बुझाना ही पहला काम होगा. ठीक है. एट द सेम टाइम डोंट थिंक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एज प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. या तो जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उससे सॉल्व कर सकते हैं, या आप नए तरीके से सोच सकते हैं. आई एम सेइंग थिंक ऑफ इट एज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी.
स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी एक हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ या नहीं करूँ, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। मे बी दिस इज नॉट द राइट प्रॉब्लम, मे बी दिस प्रॉब्लम इज टू ओल्ड टू सॉल्व नाउ। और जो रियली क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक नया प्रॉब्लम सोचते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो किसी ने पहले सोचा नहीं सॉल्व करने के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि इफ यू रियली वांट टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स। ये हमारे एलोन मस्क साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी ने थोड़ी बोला था कि हमको एक कार बना के दो, इट वाज नॉट ए प्रॉब्लम। उन्होंने कहा मैं तो बनाऊंगा, कुछ करना है जो कर लो तुम, मैं तो बनाऊंगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हर आदमी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने 3 चीजें बोली आपको शुरू में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम इस सब के बारे में बहुत लंबी चर्चाएं करेंगे। हमारे सब एलुमनस जो है आपसे बात करके बहुत खुश होंगे, और मुझे लगता है कि ये ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा ग्रुप है। जिस तरह के सवाल आए, जिस तरह के जो सवाल आए उससे भी पता चलता है कि आप कौन लोग हैं। और कुछ बहुत अच्छे हमारे पास वीडियोस हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे बाद में, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। पांडे जी के चेहरे पे एक टेंशन दिख रहा है कि 11:32 हो गया है और अभी तक सेशन खत्म हुआ नहीं है। व्हाट आई से वी आर रेडी ऑल ऑफ अस, और इसके अलावा भी बहुत हैं जो आपके साथ बात करना चाहते हैं। और राहुल, सॉरी सर, आई विल जस्ट इंटरप्ट यू। मैं आपकी तरफ से एक एश्योरेंस बच्चों को देता पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए, तो आप एलुमनाई की टीम हमेशा तैयार है। मैं आपकी तरफ से आश्वस्त करता हूं बच्चों को, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली 1 आवर जी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक छोटी सी चीज के साथ यह बात खत्म कर रहा हूँ कि मैंने संवाद सेशन जो किए हैं और एलुमनाई के साथ जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे एक चीज समझ में आई है कि अक्सर जो अचीवर्स होते हैं ना, एक बैच में बहुत सारे अचीवर्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जैसे संजय के मित्र है, उनकी बैच में बहुत सारे अचीवर्स हैं। इसी तरह जो 2003 बैच है उसमें बहुत सारे अचीवर्स हैं, 95 बैच में बहुत सारे अचीवर्स हैं, 96 बैच में बहुत सारे अचीवर्स हैं, 97 में भी। 97 में मैं आने वाला था आपके पास। ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये आप जब आए हो और कोविड के जमाने में ये अलग तरह का इंडक्शन हुआ है, अलग तरह से ये सब लोग कभी भी प्रोग्राम में आप जो बैच आती है उससे नहीं मिलते, आज आपसे मिल रहे हैं। तय कर लो सबसे पहले कि ये जो बैच है, व्हाट इज दिस बैच ऑफ 24? ये बैच ऑफ 24 जो है, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट बैच। टेल योरसेल्फ वी आर गोइंग टू बी कूल गाइस। टेल योरसेल्फ कि जो हमारे पहले की किसी बैच ने नहीं किया वो हम करेंगे। एंड इंडिविजुअली टेल योरसेल्फ कि मैं इन 4 साल में सीखूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। दोस्तों, कुछ ऐसा काम करो कि किसी दिन फोन उठाकर मुझे आपसे बात करना पड़े और कहना पड़े, दोस्त सुना है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गेसु संवाद में स्पीकर बनकर आओगे क्या, गेस्ट बनकर आओगे? मुझे ये आप मौका देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जो है बाकी बहुत सारे दोस्त जो हैं, ये सब अभी तक गेसु संवाद में नहीं आए हैं, लेकिन ये सब आपके सामने आएंगे और हम इनसे बहुत सारे तब सवाल पूछेंगे और गहरे जाएंगे। तो इंतजार कीजिए। संजय, आप UECU कनेक्ट की लिंक यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, तो बच्चे लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। कि एलुमनाई लोगों की हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर नई इंटर्नशिप के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरे एलुमनाई कहाँ पर है उसके बारे में आपको पता चलेगा। सर, ये चैट बॉक्स में आपने शेयर कर दिया और मैं इसे सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो सर, हम यहाँ पर अभी लेकिन वक्त join with us, and that talk will start at 10:40. So we are still having 3 minutes time. So by the time you can get a change, or you want to share, you can share it with Shivani ma'am is here with you. I'm just connecting to the next speaker. So we'll be here at 10:40 or 10:42 sharp. So stay connected. Somebody would like to share something about this talk, please go ahead.